ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी। कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन वर्ड्स यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। इसमें बेसिक कम्युनिकेशन पहले कहते थे किसको है, तो ये पाया कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन between two devices. Normally, in embedded system, the communication is between either microcontroller to microcontroller or from microcontroller to sensor, or from sensor to controller. So, these are the different ways to communicate in an embedded system. And while discussing in the previous class, we have seen that there are different protocols, with different rules which are used while communicating with each other. Some of the protocols are like RS232, RS485, SPI I2C, CAL, VART. So these are the protocols which are used while communicating. In the last lecture, we have also learned the basic communication procedure, which is of two types, that is parallel and serial. And again, serial communication is divided into two parts. Two methods are used to other uses: asynchronous and synchronous transmission. And in parallel communication, we have seen that all the bits are transmitted at the same time, for shorter distance, and the amount of bit which is to be transferred determine how many number of wires and wires are. It is a costly communication procedure, but it is faster also. Data are transmitted in a very less time, such as the data transmission between hard disk to computer or printer, laptop to printer. So all these transmissions, all this communication process is a parallel. Similarly, when we talk about the serial communication in the previous class, we have seen that this is a communication procedure where the communication takes place bit by bit, one after another, and a single line is used for communication. All the data bits are transmitted on the single line. It is less costlier. And long distance communication, it is basically based on like telephone and use. This is the common procedure for serial communication. Then we have seen the block diagram, or you can say the simple diagram of serial communication and parallel communication. Serial communication is of two types: asynchronous and synchronous. In a synchronous system, a single byte is transferred at any time. The starting of the transmission is recognized by start bit, and the end of the transmission is signified by end bit. Whereas in synchronous transmission, we have seen that transfer of block of data at the time. It requires clock signals, and the protocols which are using synchronous serial transmission is SPI and I2C. Whereas asynchronous communication is used by UART. When we talk about the data transmission, then data transmission is nothing but procedure to transmit data between transmitter and receivers. There are three types of data transmission. We are discussing the architecture that is simplest,
half duplex, full duplex, and simplex one-way transmission is taking place, whereas in the full duplex and half duplex, the data transmission carried out in both the ways, but in half duplex, data can be transmitted by using a single set of transmitter and its zero. In full duplex, the data is transmitted by two sets of transmitter and receiver. Then we have discussed about the protocols. So protocols are needed in communication on basically on three factors: that how much of data is transferred, how the data is packed, the different mechanisms by which the data is packed. A character is formed by how many bits, and start and end of the data is recognized by bits. So there are basically three rules on which the protocols are made. Then we have discussed about the baud rate. Baud rate means the transfer rate, that is bits per second. So bits per second is nothing but the baud rate, and it decides the transmission rate or the communication transmission rate in serial communication. Then we have discussed synchronous and asynchronous protocols. These protocols are divided into two categories: synchronous and synchronous protocols. So I2C and SPI comes under synchronous communication protocol, whereas UART and CAN comes under asynchronous communication protocol. So these are the communication protocols on which we have discussed, and at the last lecture we had started the first protocol, that is SPI communication protocol. How SPI protocol is used, what are the general features of SPI protocol. It shows that it is a 4-line protocol which has 4 lines: MISO, MOSI, SCLK, and CS and SS wires. It has one master and several slabs depending on the requirement of the client. With the highest capacity, transmission capacity of 10 MB. Synchronous serial transmission, which we have already discussed. So these are the things which we have discussed in the earlier lecture. Now in this lecture, we are going to discuss in detail about the SPI. So how SPI works? SPI काम कैसे करता है? तो जैसे हम लोगों ने बात की कि एक जो है synchronized synchronous transmission protocol है, it means it requires. So the clock signal synchronizes the output of data bits from the master to the sampling of bits by this time. तो ये एक तरह का डेटा बिट सेंड करता है क्लॉक सिग्नल, जो सिंक्रोनाइज करता है मास्टर की स्लेव से. One bit of data is transferred in each clock cycle. तो हर एक क्लॉक साइकिल में एक बिट का डेटा ट्रांसफर होता है. इसलिए जो क्लॉक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है आप क्या लें, तो वही जो इस सिस्टम की स्पीड है, क्योंकि जो क्लॉक सिग्नल की स्पीड होगी वो डिटरमाइन करेगी बिट्स पर सेकंड. बिट्स पर सेकंड. SPI communication is always initiated by the master. SPI common protocol जो प्रोटोकॉल है, या इस तरह का जो कम्युनिकेशन है, इसमें कम्युनिकेशन है वो मास्टर के थ्रू इनिशिएट होता है. कोई भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जब किसी कॉमन क्लॉक सिग्नल को यूज करता है, उससे हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कहते हैं, सिंक्रोनस कहते हैं. SPI उनमें से ही तरह का.
सिंक्रोनस प्रोटोकॉल भी होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे UART, जहाँ पे बोथ साइड्स रेडी रहते हैं डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए। वहाँ पे कॉन्फ़िगर करने का तरीका जो है उससे ये होता है कि कब स्टार्टिंग बिट सेंड की गई। फिलहाल हम लोग जो है वो SPI की बात करेंगे। तो SPI में डेटा ट्रांसमिशन की स्टार्टिंग क्लॉक सिग्नल पर डिपेंड है। क्लॉक सिग्नल सेंड होंगे मास्टर के थ्रू, मास्टर उस प्रोसेस को इनिशियलाइज करेगा। The clock signal in SPI can be modified using the properties of clock polarity and clock. तो क्लॉक की पोलैरिटी और क्लॉक का फेज, फेज यानी कि हम आइदर पॉजिटिव फेज, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, इस पर डिपेंड होगी SPI की क्लॉक सिग्नल्स। These two properties work together to define when the bits are output and when they are sampled. यानी कि फॉलिंग एज पे सैंपल करना है, राइजिंग एज पे सैंपल करना है। तो सैंपलिंग कब होनी है ये डिफाइन करने का काम मास्टर है। Clock polarity can be set by the master to allow for bits to be output and sampled on either the rising or falling edge of the clock. ये क्लॉक पल्स का जो डिसीजन लेना है वो मास्टर को लेना है, और मास्टर अलाउ करेगा कि जो बिट ट्रांसफर होनी है, जो बिट सैंपल्ड होनी है, जो बिट भेजी जानी है, वो आइदर क्लॉक सिग्नल के राइजिंग एज पे होगी या उसके फॉलिंग एज पे। Clock phase can be set for output and sampling to occur on either the first stage or second stage of the frequency. तो आइदर फर्स्ट स्टेज पे सैंपलिंग स्टार्ट करते हैं या सेकेंड स्टेज पे करते हैं। तो ये मास्टर को डिसाइड करना है। स्लेव का सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, अब हम इसकी बात करेंगे। एक बार क्लॉक सिग्नल फाइनल हो गई कि वेदर इट इज ऑन राइजिंग एज और फॉलिंग एज एंड इट इज डिसाइडेड बाय द मास्टर, नाउ द टर्म्स कम टू द स्लेव। द मास्टर कैन चूज विच स्लेव इट वांट्स टू। मास्टर अगर कई स्लेव से कनेक्टेड है तो मास्टर चूज करेगा कि कौन से स्लेव को डेटा ट्रांसफर करें, कौन से स्लेव से बात करना चाहता है। इसके लिए मास्टर स्लेव की CS और SS लाइन पे एक लो वोल्टेज सिग्नल सेंड करता है। इन द आइडल और नॉन ट्रांसमिटिंग स्टेट द स्लेव सेलेक्ट लाइन is kept at 100। तो नॉर्मली वो लाइन जो है स्लेव सेलेक्ट की वो हाई वोल्टेज पे रहती है। जब मास्टर उस स्लेव से कांटेक्ट करना चाहता है तो वो उस लाइन पे एक लो वोल्टेज लेवल सेंड करता है। क्योंकि उस मास्टर से कई स्लेव जुड़े हुए, मल्टीपल CS एंड SS पिंस में भी अवेलेबल ऑन द मास्टर, which allows the multiple slaves to be wired in parallel। तो जब भी किसी स्लेव पे एक लो वोल्टेज सिग्नल उसकी सेलेक्ट लाइन पे आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि मास्टर उस स्लेव से कांटेक्ट करना चाहता है। एक तरीका तो अगर एक ही स्लेव में नहीं, एक ही स्लेव कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मास्टर उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। पर अगर मल्टीपल स्लेव है तो उस कंडीशन में मास्टर डेजी चेनिंग को फॉलो करता है। डेजी चेनिंग क्या होती है कि इसमें अगर एक मास्टर स्लेव से कनेक्ट करना चाहे तो वो बारी बारी से हर एक स्लेव को कनेक्ट करे, या सारे ही स्लेव मास्टर से कनेक्ट हों और सारे के सारे सिग्नल स्लेव को भेजे जाएं, पर किसी एक पर्टिकुलर स्लेव के लिए वो सेलेक्ट लाइन को का जो वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज सिग्नल देगा, ये इंडिकेट करने के लिए कि मास्टर उस पर्टिकुलर स्लेव को सेलेक्ट कर रहा है। Multiple slaves में SPI can be set up to operate with single master and a single slave, and it can be set up with multiple slaves controlled by a single master. There are two ways to connect multiple slaves to the master। दो तरीके हैं मल्टीपल स्लेव्स को कनेक्ट करने का मास्टर के साथ। If the master has multiple slave selections, the slaves can be wired in parallel like this। अगर मल्टीपल स्लेव हैं और उसी मास्टर से जुड़े हुए हैं तो उनको जोड़ने का तरीका क्या होगा वो
हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे इस डायग्राम से। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक मास्टर से 3 स्लेव जुड़े हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के वायर्स यूज किए गए हैं फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप देखेंगे कि जो मास्टर है उसके पास 3 सेलेक्ट लाइन्स है, SS1 for slave 1, SS2 for slave 2, SS3 for slave 3. And all these 3 yellow color lines are connected to the SS and CS pin of slaves. MOSI is connected to the slaves. MOSI pin. MISO of each slave is connected to the MISO of master. Clock is connected to all the slaves, to synchronize the operation. Now, how master selects the slave? If only one slave select pin is available, the slaves can be daisy chained. So, in the previous diagram, if you see, there are 3 separate pins. So, there is no problem for selection of slave. Master choose a particular slave select line and try to communicate it easily. If master wants to connect the slave 1, it simply puts a SS1 signal low to select slave 1. If master wants to connect the slave 2, it simply puts a low voltage signal at SS2. And similarly, likewise, if the master wants to communicate with slave 3, it puts a low voltage signal at SS3. The problem comes when the master have only one select line signal or one select line pin. Then the procedure of daisy chain is used. So in this particular diagram, you see that master have one select line, one SS signal, and 3 slaves are there. So if the master wants to connect with slave 3, it sends a signal, low signal, slave 3, and start communicating with it. But how this is possible? Are there any other procedure? Because master is connected to the slave by that only single line, that is SSCS. So the same signal is transmitted to slave 1, slave 2, slave 3. So are there is any other procedure, any other principle on which the communication takes place? So naturally here the daisy chain planning is considered, in which the slave 1 is considered first, then slave 2, then slave 3, and again likewise the same chain is followed one after another, and this is the priority for selection. Now what is the role of MOSI and MIS? Why they are used? इनका काम क्या है, वो समझने का प्रयास करें। MOSI और MIS का यूज क्यों? देखें तो मास्टर जो है स्लेव को बिट बाय बिट डेटा सीरियली MOSI लाइंस स्लेव उस डेटा को रिसीव करता है, एट MOSI पिन, स्लेव के पास लगी हुई है MOSI पिन, उसके थ्रू वो रिसीव करता है। Data set from the master to the slave is usually sent with the most significant input. अब जो डेटा मास्टर स्लेव को सेंड, उसमें भी जो नियम है वो ये नियम है कि वो जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये तो ट्रांसफर हुआ मास्टर से स्लेव की डेटा, इसमें सबसे पहले MSP सेंड हुई और उसके बाद दूसरा
जो प्रोसेस है वो ये कि अगर स्लेव मास्टर को डेटा सेंड करना चाहे तो क्या प्रोसेस हो सकता है? Slave can also send data back to the master through the MIS. Slave भी मास्टर को डेटा सेंड कर सकता है, इस लाइन से सेंड करेगा MIS से. The data sent from the slave back to the master is usually sent with the least significant data. अब जो डेटा स्लेव सेंड बैक करेगा मास्टर को, उसमें नियम ये है कि वो उस डेटा का लीस्ट सिग्निफिकेंट सबसे पहले अभी जब हम लोगों ने देखा कि मास्टर ने जब डेटा स्लेव को सेंड किया तो डेटा का LSB पहले सेंड किया गया. अभी जो डेटा सेंड हो रहा है स्लेव से मास्टर को, उसमें LSB पहले सेंड किया. ये दो इनके रोल हो गए, MOSI और MIS. अब इसके पूरे ट्रांसमिशन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे. SPI का जो ट्रांसमिशन होता है किस तरह से होता है, स्टेप वाइज उसको समझने का. स्टेप नंबर 1 में मास्टर आउटपुट का ट्रांसफर, यानी मास्टर एक क्लॉक सिग्नल सेंड करेगा. सिग्नल सेंड कहाँ से होंगे, उसको SCL के पिन से, सिंक्रोनाइज क्लॉक पिन लोड, उससे वो क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है और सेंड करता है. So in response to that, the master switches the SSCS pin to a low voltage level which activates it. साथ ही साथ इसके बाद स्टेप नंबर 2 में मास्टर अगर सिंगल स्लेव से कनेक्टेड है तो वो अपनी सेलेक्ट लाइन पिन जो है, सेलेक्ट स्लेव की जो पिन है उस पर एक लो वोल्टेज सिग्नल सेंड करता है. स्टेप 2 था कितना सिग्नल सेंड किया गया, सिंक्रोनाइज किया गया, उसको बताया गया कि इधर फॉलिंग एज पे डेटा आएगा या राइजिंग एज पे डेटा आएगा. दूसरा जो काम किया गया वो ये बताया गया कि कौन से स्लेव से डेटा ट्रांसमिशन होना. Third step, the master sends the data one bit at a time to the slave along the MS line. एक बार मास्टर ने डेटा सिंक्रोनाइजेशन कर लिया, सिग्नल सेंड कर दिया, स्लेव को एक्टिवेट कर दिया, अब डेटा सेंड करने की बारी. जब डेटा सेंड करने की बारी हो तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं MSB को सबसे पहले MSB is done. After sending the MSB, the master sends all other bits of the one after. The slave reads the data as they are. Slave data जैसे इस ऑर्डर में मिलता है उस ऑर्डर में उसको रिसीव करता है. If a response is needed, the slave returns data one bit at a time to the master along with the MIS. अगर रिस्पॉन्स को चेक करना है कि क्या डेटा सेंड हुआ, डेटा वहां पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस बात की जानकारी कैसे मिलेगी, पता कैसे लगे, इस बात की सत्यता का अंदाजा कैसे लगाया जाए, तो स्लेव रिटर्न करता है डेटा को वन बिट एट अ टाइम टू द मास्टर along the MIS. अब जब स्लेव डेटा को सेंड करेगा मास्टर को तो MIS लाइन का यूज करता है और LSB को सबसे पहले भेजता है, इस सिग्निफिकेंट बिट को सबसे पहले भेजता है. मास्टर जब उस बिट को रिसीव करता है एज इट इज जैसा भेजा गया तो ये पाया जाता है कि सही
completed, it has no problem. इस तरह से whole communication process जो है SPI प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। अब SPI प्रोटोकॉल में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी बात कर लेते हैं। There are some advantages and disadvantages to using SPI, and if given the choice between different communication protocol, you should know when to use SPI according to your requirement. तो अगर आपको पता रहेगा कि SPI में क्या एडवांटेज है और बाकी और प्रोटोकॉल्स के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तो उनके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि आपके अंदर जो सिस्टम है कौन से प्रोटोकॉल को यूज करें, इसे नहीं यूज करें। एडवांटेजेस no start and stop bits, so the data can be streamed continuously without interruption. कोई स्टार्ट और स्टॉप नहीं चाहिए होती, इसलिए कॉन्टिन्यूअस डेटा सेंड किया जा सकता है। डेटा का टर्मिनेशन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि डेटा इंटरप्टेड फॉर्म में जा रहा है, स्टार्ट बिट गई, फिर डेटा सेंड हुआ, एक फ्रेम सेंड होता है, फिर स्टॉप हुआ, फिर नेक्स्ट फ्रेम भेजा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। SPI में कॉन्टिन्यूअसली एक बार आपने कनेक्ट कर दिया, एक बार स्लेव कनेक्ट हो गया तो आप डेटा को सेंड करते रहते हैं। नो कॉम्प्लिकेटेड स्लेव एड्रेसिंग सिस्टम बनता है, देखेंगे A2C में जो प्रोसीजर है कॉम्प्लिकेटेड, इसकी स्लेव एड्रेसिंग इतना स्मूथ नहीं है जितना SPI का। SPI का सिस्टम काफी स्मूथ है, A2C का उतना स्मूथ है। जो डेटा ट्रांसफर रेट है I2C का, उससे ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट है ये SPI, यानी कि कम्युनिकेशन स्पीड काफी अधिक होती है। सीरियल कम्युनिकेशन नेचुरली इट इज लेस speed in comparison to parallel communication, but when comparing with the other protocols used in serial communication, naturally SPI is having an edge over the I2C with respect to speed. Separate MISO and MOSI line, so data can be sent and received at the same time. Once the mechanism has been completed between the connection of master and slave and the data transmission started, data can be transferred and received at the same time between master and slave using two different lines, that is MISO and MOSI. MISO और MOSI लाइन को यूज करके दोनों ही तरफ डेटा का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन किया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं SPI और बाकी और प्रोटोकॉल्स में। उसमें नंबर ऑफ बायर्स हम लोग अभी आगे देखेंगे। I2C में बात करेंगे या UART में बात करें तो ये डबल वायर 2 वायर सिस्टम है, तो ये 4 वायर सिस्टम। नो एक्नॉलेजमेंट दैट द डेटा हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड, यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं जनरेट होता, तो जानने का तरीका SPI में वो सिर्फ यही है कि डेटा वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा, या हुआ या नहीं रिसीव किया। जानने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि हम वापस उस डेटा को जब स्लेव से मास्टर की ओर आने जाता एग्जैक्टली उस तरह से तक हमको पता। यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट बिट या एक्नॉलेजमेंट लाइन जैसी कोई बात यहाँ पे एरर चेकिंग जैसा कोई प्रोसीजर नहीं है। वंस द डेटा हैज बीन सेंट, it is received by the slave, and if there is any possibility of error between while sending the data from master to slave occurs due to noise or other condition, then
data may falsely, may wrong be intercepted or being received at the same time. As there is no error checking procedure or error checking bit, such as parity bit is introduced here in SPI. A single master is used here, so a single device can be used here. So a single microcontroller or a single device can communicate here. So if you are using a several microcontroller and you want to connect with different sensor, then naturally SPI is not a feasible protocol for the purpose of the project. So these are the disadvantages of SPI. The next protocol which we are going to discuss today is I2C communication. It is also known as inter-IC, I2C. These are the names of the same protocol. It is a very important serial communication protocol which is used in modern electronic system. It is invented by Philips in the year 1996. The objective of reducing the cost of production of television, remote control motivated Philips to invent. That's very interesting. Tale behind the invent of this protocol is that Philips wanted to reduce the cost of the remotes used in their television operation. So they want a protocol which requires less number of wires, less number of signals, less number of wires, which is used for serial communication. So they behind SPI and use another protocol. I2C or I2C is a serial bus. Can be implemented in software, but most of the microcontrollers use IAC or I2C by incorporating it as hard IP. I2C can be used to interface microcontroller with RTC, real-time clock, EEPROMs, and variety of devices, such as chemical sensors, temperature sensors. I2C is used to interface chips on the board, generally between processor chip and any peripheral which supports I2C. So I2C माइक्रोकंट्रोलर्स के साथ यूज होती है उन सब एप्लीकेशंस के लिए वेरिएट टाइम क्लॉक यूज हो रही है, EEPROM यूज हो रही है, सारे सेंसर्स यूज हो रहे हैं, मदरबोर्ड्स पे बहुत सारी चिप लगी हुई है, सारी चिप के साथ कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीजें जो कनेक्ट कैसे किया जाए, कैसे कॉमन प्रोटोकॉल यूज किया जाए, तो फिर I2C का यूज किया। I2C एक बहुत ही रिलायबल वायरलाइन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज किया। I2C जो कि एक सीरियल प्रोटोकॉल है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, तो ये 2 वायर इंटरफेसेस के लिए यूज होता है, अभी भी यूज होता है। हालांकि उन डिवाइसेस के लिए जो स्पीड में कम हो, तो जो माइक्रोकंट्रोलर्स की स्पीड थोड़ी कम थी, उनके लिए बहुत ही फिजिबल प्रोटोकॉल रहा ये
माइक्रो कंट्रोलर मेमोरीज के लिए, कन्वर्टर्स के लिए, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस को जब कनेक्ट करने की बात आई, या ऐसे और जैसे मतलब पेरिफेरल्स एम्बेडेड सिस्टम को जब उनको कनेक्ट करना होगा तो वायर इंटरफेस की वजह से I2C का एज I2C ने SPI और UART के बेस्ट फीचर्स को यूटिलाइज किया। I2C ने SPI के भी कुछ अच्छे फीचर्स लिए, कुछ अच्छे फीचर्स लिए, उनको कंबाइन किया, यूज किया। With I2C you can connect multiple states to a single master. I2C की सहायता से आप मल्टीपल स्लेव्स को एक सिंगल मास्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, SPI में होता है। एंड यू कैन हैव मल्टीपल मास्टर्स कंट्रोलिंग। बिल्कुल ही SPI में ये सुविधा नहीं थी मल्टीपल मास्टर्स की, लेकिन यहाँ पे ये सुविधा रहती है कि मल्टीपल मास्टर सिंगल कंट्रोल, सिंगल स्लेव को कंट्रोल कर सकते हैं। This is really useful. When you want to have more than one microcontroller, logging data to the single memory card. ये उन जगहों के लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई जहाँ पे किसी सिंगल मेमोरी कार्ड को कई सारे माइक्रो कंट्रोलर डेटा सेंड कर रहे हैं, स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए। उस कंडीशन में SPI फ्रूटफुल नहीं था क्योंकि वो सिंगल मास्टर मल्टीपल स्लेव वाला सिस्टम है। I2C यहाँ पे मल्टीपल मास्टर्स सिंगल स्लेव के सिस्टम को अप्लाई करता है, यूज करता है, उसको यूजेबल फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करता है एंड इजीली उनके बीच में कम्युनिकेशन को एक वे प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी एम्बेडेड सिस्टम में कई माइक्रो कंट्रोलर लगे हों और वो किसी मेन सिस्टम की मेमोरी को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। I2C protocol uses two wires for data transfer between devices. तो अगर आप देखेंगे तो I2C दो वायर का सिस्टम है और जो दो वायर्स के हैं, एक है सीरियल डेटा लाइन, दूसरा सीरियल क्लॉक लाइन। The reduction in number of pins in comparison with parallel data transfer is evident. तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि SPI और I2C में जो सबसे पहला डिफरेंस दिखता है वो दिखता है नंबर ऑफ पिन्स। जस्ट हाफ हो गई है, वहाँ पे 4 पिन्स थी, 4 वायर्स थे, यहाँ पे 2 ही पिन है, 2 ही वायर्स यूज होते हैं। तो इट considerably reduces the cost of production. सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, पैकेज साइज भी रिड्यूस हो गया, कंजम्पशन भी कम हुआ। I2C is also best suited protocol for battery operated device. तो जो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है उनके लिए चूंकि पावर कंजम्पशन बहुत मैटर करता है, उन जगहों पे I2C एक बेटर अल्टरनेटिव टू वायर कम्युनिकेशन सीरियल इंटरफेस है। SPI में चूंकि 4 वायर सिस्टम था, इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा था। यहाँ पे अगर बात करें तो पावर कंजम्पशन रिलेटिवली कम हो जाता है, पैकेज साइज रिड्यूस हो जाता है। तो ये सीरियल इंटरफेस के लिए, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन बनाता है when several microcontrollers are used in the same system. तो आज इतनी बात मुझे करनी थी इस लेक्चर में। इस लेक्चर में जब हम तो I2C की वर्किंग और इसके और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके फीचर्स हैं,
डिटेल में देखेंगे, जानेंगे। देखिए सीरियल कम्युनिकेशन में, सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो I2C कुछ जगहों पे SPI से बेटर कैसे परफॉर्म करता है, एडवांटेजेस इसके देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। इसके लिए इतना ही लेक्चर में, नेक्स्ट कल क्लास होगी।